Book 2, the book of the Traveler of the Worlds, Canto 1, the World-Stair. जो मैंने बही देखुंट पेज 95 को देखिए. Could be seen that shuns the mortal eye. All could be known the mind has never grasped. All could be done no mortal will can dare. A limitless movement field, a limitless peace, in a profound existence beyond earths. So these are the lines from the Canto the World-Stair. এই जो कैंटोटी हमर द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स रो प्रथम कैंटो. आउ वी विल गो थ्रू दिस 15 कैंटोज ऑफ दिस बुक. बट एथिरे अनेक जगार आलोचना बेले भी जिते बड़े श्री अरविंद थिले मध्य सेतबेले एई कैंटो को लेकिन लोकों भितर क्यूरियोसिटी बहुत अधिका थिला. कहीं somehow people related that this canto is a projection, is a kind of journal of Sri Aurobindo's yogic journey. So sometimes when people used to say कि this is Sri Aurobindo's yoga and Ashwapati is no one else but Sri Aurobindo. So it was pointed out by mother and lot many other disciples also, जो मैंने कहले कि Ashwapati is an aspect of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo's yoga and Sri Aurobindo's aim, Sri Aurobindo's journey is much vaster. Somehow an aspect of that journey could be related to Ashwapati. So still Ashwapati is an aspect of Sri Aurobindo only. Sri Aurobindo विशाल प्रसारित तांकर चेतना और ता भितरे अश्वपति कर ए जो कैंटोटी रे Sri Aurobindo has tried to build up a journey or we may say a posturing of the journey. जो विराट यात्रा रे जो महायात्रा रे से बाहर को जाउछंती तापाई केवल गोटे प्रस्तुति नुहे गोटे पोस्चरिंग माने एकदम से प्रिपेयर्ड and he has started the journey, just he has begun the journey. And as if in a small glance he is trying to build that entire vision for what Ashwapati is getting prepared for. ए यात्रार ए जो जगत गुड़िक देकी जिबे अश्वपतिंकर स्थिति एई लोक गुड़िकर जहाँ भी सत्ता रही बा जहाँ स्थिति रही से गुड़िक विषय अल्प अल्प कहीकि ए कैंटोटी को श्री अरविंद हैज कंस्ट्रक्टेड. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि सावित्री रे आमे जेते बेले कोनोसी लाइन्स कोनोसी कैंटो बा कोनोसी गोटे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बा विजन को धरिकी बसु, it is exactly like touching upon Sri Aurobindo's consciousness. Sri Aurobindo's consciousness reflected with words in Savitri. स्पर्श करिके आसीबा खाली टिकिए श्री अरविंदो चेतना को एई लाइन टी लिखिला बेले एई विजन टी क्रिएट कला बेले प्रभुंको मनरे कौन चलथिबो. हाउ वुड ही बी थिंकिंग अराउंड दिस थॉट. That's something. এই অনুভবটি এই পুরা ট্রাভেলার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস রে ইউ উইল অফ কোর্স ফর দ্য এন্টায়ার সাবিত্রী, বাট অ্যাজ উই এম্বার্ক upon a journey with Ashwapati, this is how Sri Aurobindo is introducing him to us. And more than that, এই ক্যান্টোটি রে ट्रैवलर किए आम मैंने समस्ते जानी अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स. ये जो जगतर यात्री जनक रही यात्री किए आम समस्ते जानी वी नो
And we also know कि how his soul was released, how it has attained a freedom of greatness, केमती से गोटे freedom of greatness, spirit's freedom and greatness पाइची. And now Sri Aurobindo will also introduce to us that जो wisdom रो देवी मानकर प्रभाव इला सरस्वती शर्मा दक्षिणा जो मानक आम इंस्पिरेशन रिविलेशन इंट्यूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन रो देवी कहू से मानकर प्रभाव रे किपरि तांकर चेतनार जो विद्या भागटी रही से किपरि भाव में उन्मुख हो जाइछि आ प्रत्येकटी जगत को से किपरि परिदृश्यमान करुछन. श्री अरविंदर गोटे एसे रही द डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स से लिखती they are here. Man draws from the life world his vital being, from the mind world his mentality. He is ever in secret communication with them. He can consciously enter into them, be born into them if he will. Even into the solar worlds of the truth he can rise, enter the portals of the superconscient, cross the threshold of the supreme. The divine doors shall swing upon open to his increasing soul. The human ascension is possible because every being really holds in himself all that his outward vision perceives as if external to him. We have subjective faculties hidden within us, which correspond to all the tiers and strata of the objective cosmic system. And these form for us so many planes of our possible existence. This material life and our narrowly limited consciousness of the physical world are far from being the sole experience permitted to man. He lives in contact and union with their powers and godheads and remolds himself in their image. Each ascent is thus a new birth of the soul. श्री अरविंदर कहवा कथा हेउची जे मनुष्य जेमती मैटर टी एई वर्ल्ड रु तैयारी करची निजर तार ए जो जड़ जगत रु ए जो तार हाड़ मांसर शरीर टी पंच महाभूत तत्व रु जात हेछि ठीक सेमती सी वाइटल वर्ल्ड रु मध्य निजर एनर्जीज को ड्रॉ करूची आ मेंटल वर्ल्ड रु निजर मेंटालिटी को ड्रॉ करूची. सबु बेले सी किए न जानले भी गोटे सूक्ष्म प्रदेश रु अनेक वार्ता ता पाखु आसुची किछिटा ईगो बा इग्नोरेंस रो फिल्टर दे कि ता पाखरे पहुंची पारु नाही आउ तार अर्थ या नुहे जे सी केवल ए लिमिटेड वर्ल्ड रो यात्री हेबा पई आसीची. प्रच्छदरे थिबा एपरि अनेक सब्जेक्टिव फैकल्टीज ता भितरे रहिची जे ऑब्जेक्टिव कॉस्मिक इकोसिस्टम को बाय ऑब्जेक्टिव कॉस्मिक सिस्टम को आ तार प्रत्येक टी लेयर बाय लेयर रे थिबा जगत गुडी को से प्रवेश करि परिबो. से निश्चय ऊर्ध्व को उठी परिबो एवं एई महाशक्ति मानक संगे कांटेक्ट और यूनियन द्वारा तार प्रत्येक टी आरोहण तार आत्म तत्वर गोटे नूतन जन्म भाव रे हेबो. एपरि किछि कही श्री अरविंद आमको हायरार्की ऑफ वर्ल्ड साड को नै जिबे एई कैंटो द वर्ल्ड स्टेयर रे. तेणु आसंतु आम समस्ते वी विल स्टार्ट आवर जर्नी इन द वर्ल्ड स्टेयर. Alone he moved, watched by the infinity. Around him and the unknowable above. गोटे सिंपल कैनवास रे गोटे विजन टे चिंता करंतु. अश्वपति छिड़ा हिचंती एवं मूव करूचंती. अलोन ही मूव्ड से चालुचंती. सूक्ष्म प्रदेश रो यात्रा ये आपण कोनोसी पार्थिव यात्रा भाबिबेनी. सूक्ष्म प्रदेश रे ही इज जस्ट ग्लाइडिंग वेयरिंग व्हाइट एंड एवरीवेयर देयर इज अ सटल एटमॉस्फियर. सूक्ष्म जगत सब किछि खूब सूक्ष्म स्थूल नुहे आम जगत भलिया नुहे. सूक्ष्म जगत कहले आपण कोन बुझंती व्हेन वी से सटल वर्ल्ड. सटल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड व्हिच कैनॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस. तेणु
इंद्रिय द्वारा ताकू गम्य करने को चेष्टा बोध गम्य करने को चेष्टा करंतुनी इंद्रिय केबे भी ताकू बोध करि परिबनी भाबी परिबनी ता विषय तेणु चिंता करंतुनी सब किछि जहा एई जगत रे आपन को रिजिड दिसुची गोटे छोटिया हिंट बा क्लू द्वारा बुझिबा जहा किछि भारी ग्रॉस आ रिजिड दिसुची ताकू फ्लेक्सिबल कर दियंतु गोटे प्रवाह थाउ गोटे फ्लो थाउ से कहलेनी एलोन ही वाक्ड एलोन ही मूव्ड भासी जाउची सेठी सब किछि फॉर्म टी भारी रिजिड नुहे किछि गोटे जोड़ा गोलाकार दिसुची गोल ही हेकी रहइबो बोली नाही से सेठी मेल्ट हे जाई पारे संगे संगे धुआं बळिया हेकी किछि गोटे अलगा शेप रे कन्वर्ट हे पारे एवरी फॉर्म इज फ्लेक्सिबल एंड अश्वपति इज मूविंग व्हाइल ही मूव्स the infinity is watching him around him is infinity ता माने सेठी आ केही नाहंती गोटे अनंतता तांको घेरी रही छी watched by the infinity around him and the unknowable above and the unknowable above जने अज्ञेय रहिचंती जे ऊर्ध्वरे अछंती एंड द कहूनाहांती रादर एटी भारी सुंदर कथाटिए श्रद्धावान लिखिचंती अश्वपति इज ऑल अलोन मूविंग इन दैट अदर स्पेस एंड टाइम ही फील्स दैट ही इज बीइंग वॉच्ड by all the infinity, all the limitlessness of the new space and time which is surrounding him, and by an unknowable reality that is above. In some way, Ashwapati can know this new space and time that he has moved into. But above that infinity lies the unknowable. एटा सत जे तांकु चारिपटे गोटे अनंतता गोटे विस्तारता घेरिकी रही किंतु ए सबुर ऊर्ध्वरे किछि गोटे अच्छी जहाँ अननोन से अननोन को अननोएबल कहउछंती माने तांकु जानी हेबो नाही किंतु श्री अरविंद कहंती श्री अरविंद टेल्स अस दैट द अननोन इज नॉट अननोएबल मेनी थिंग्स आर अननोन टू अस आमे अनेक जिनस गुड़िक विषय जानी न थाउ एंड हेंस इट सीम्स टू बी अननोएबल what is actually unknowable is forever mysterious, and that's a reality which can be seen and experienced only after we raise ourselves or expand our knowledge and our sense of identity and know many new things directly or indirectly. से चेतनाटी एते विशाल जे कौनसी मानवीय छाड़ंतु कौनसी प्रकार योगीर चेतना मध्य संपूर्ण भाव में ताको कंटेन करि परिबो नाही से चेतनार जहाँ शक्ति रही से चेतनार जहाँ प्रतिफलन रही रिफ्लेक्शंस रही व्हाट एवर दैट कॉन्शियसनेस कैन प्रोजेक्ट इटसेल्फ इनटू और व्हाट एवर दैट कॉन्शियसनेस होल्ड्स इन इटसेल्फ कैन नॉट बी नोन हेंस इट इज अननोन एंड अननोएबल बाय अस. So he is watched by this infinity which is around and the unknowable above, U capital. All could be seen that shuns the mortal eye. जहाँ किछि भी तांकु सेठी दृश्यमान हेउची ए पार्थिव चक्षु ताकु देखि परिबो नाही ताठारु बहुत बहुत दूर कारण ये देखिला मात्रे आम mortal eye the moment it sees upon something it will search for a form, a shape, a name, a identity, whereas there is nothing as such to define the objects there. ताकु व्याख्या कला बेले ताई सेठी किछि भी नाही जहा ए मानविक चक्षु देखी सेथिरु बुझी परिबो बा जानि परिबो. तेणु ए कथाटी को माधव पंडित लिखुचंती this existence is beyond the earth. This existence is beyond the earth. It is unplumbable. मापी हेबो नाही. It is very profound and yet
it has a kind of kinship with our ideas and dreams. Though it is above all, it has certain affinity to our movements. We have ideas of things that are not practical. We dream of things that are not present, and yet through them all, we relate ourselves with the domains above the earth. Space is realized there as a vast experiment of the soul. The soul extends itself into infinite space. It can also concentrate itself and occupy hardly a point of space or no space. आत्मार सूक्ष्मता विषय कहते कि सेठी जहाँ किछि अछि द ह्यूमन साइट कैनॉट सी, कैनॉट रिगार्ड, कैनॉट एंटर इनटू दैट डोमेन. से कहले सन्स माने दूरेई देबा, जहाँ ता द्वारा पॉसिबल नुह रिजेक्ट कर दबा, अवॉइड कर दबा, हटा आगुरु जो कहते ना आखि आगुरु हटई दियो मोर, माने दैट इज कॉल्ड शन. So here the poet says that there are many things that avoid being seen by the mortal eye. Mortal eye सोडा को देखी परिबनी. अब कहीं कहले mortal, because mortal means subject to death. Mortality अच्छी तारा, हाँ, subject to death, which means simply human eye. Human eye cannot see. Now Ashwapati has entered a state where he can see many things which hide themselves from our physical eyes. आमो ए जो पार्थिव बा मर्त्यगत चक्षु सेगुड़िक को देखि परिबो नहीं. And he becomes able to know all that the mind has never grasped. ग्रास्प माने कोनोसी जिंस को धरिबा, बुझिबा, जानिबा, से ग्रास्प करि परुछि माने से बुझि पाउछि. To know and understand them. So there are many things in that subtler world which cannot be grasped by the mind. से पई कहले all could be known, the mind has never grasped. मन केबे से जिंस गुडी को धरिनी बा धरि परिबो नाही. आ केवल अश्वपति क्षेत्र में कहले मध्य अश्वपति मध्य अनेक जिंस मन रे जहा धरि पारि नथिले बे ए जगत रे से गुडी को सब अति चमत्कार भाव रे अति सहज रे से गुडी को सब बोधगम्य होउछि. All could be done, no mortal will can dare. एवं सबु किछि सेठी पॉसिबल करिबा जहा एठिकार थिबा पार्थिव संकल्पटिए केबे साहस मध्य करिबो नाही. जे कोनोसी जिंस करिया गेले साहस दरकार. करेज इज नीडेड. आउ करेज टा आम कैपेसिटी सहित लिमिटेड. बट सेठी जो विल पावर कथा कहउचंती से अमाप्य. इट डिमांड it or it commands great courage. Then whatever Ashwapati wants to do in that space and time, he can do, he can think, he can see. His experience is of a limitless movement filled a limitless peace. His experience is of a limitless movement. There is no end to what is moving there. But at the same time, there is a limitless peace. The movement and the peace are both endless. So there is a substance, but it is not material. But major hochi that here there is no end to what is moving there. But at the same time, there is a limitless peace. The movement and the peace are both endless. The movement and the peace are both beyond earth's parent or keen to our ideas and dreams, where space is a vast experiment of the soul in an immaterial substance linked to ours, in a deep oneness of all things that are. The universe of the unknown arose. ये जो लास्ट लाइन टी, द यूनिवर्स ऑफ द अननोन अरोज, उठिला, गिव्स अस अ वैदिक इमेज ऑफ स्वयंभू, निजे. इट्स अ सेल्फ क्रिएशन. नोबडी हैज क्रिएटेड इट. सो एज इफ आउट ऑफ नथिंग समथिंग वेरी स्पेक्टाकुलर केम अप. उठी आसिला, कहतनी से सेठी थिला कोठी भितरे उठी आसिला, हठात किना जेमती से सरफेस ऊपर को आसीगला. तो से सूक्ष्म जगत रे अशुपति सामना रे
से अज्ञेयंकर ब्रह्मांडटी बा सृष्टिटी अरोज उठी आसला. इट हैज नो एंड नो ब्रेक. से कहले इन ए प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस. The word profound means deep. Unlike the surface life we normally live, profound existence mane something which is very deep, which cannot be touched by the material earth, or which cannot be tangibly experienced by the senses. आम इंद्रिय गुड़िक जे गुड़िक को भोग करने को चेष्टा भी करिपरिबो नाही. एते डीप से जिनसटी धरी पारु नथुवो केबे. आमे जेते चेष्टा कले भी सेटा केमिति आइथिबो तार गोटे कल्पना बा तार गोटे अनुभव कौन सी प्रकार इंद्रियर परिधि भितर को आनीपर ना. से चेष्टा वृथा. केवल माँ को प्रार्थना करा जाय पारे कि विजन गुड़िक को टिके टिके आम सामने रिलेट करने करा जाय पारे. किंतु दिस एक्सपीरियंसेस आर रियली रियली डेलिकेट वन्स. या पई साधना ही दरकार. इन ए प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस भारी डीप से एक्जिस्टेंस बियॉन्ड अर्थ. से कहले पृथ्वी ठारू बहुत बहुत दूर रे. किंतु तार गोटे संपर्क रही आम जगतर गोटे एलिमेंट सह. कौन ना आम आइडिया सहित आम ड्रीम सहित. देखो ए दीटा जहाँ सृष्टि करती आम इंद्रिय माने केबे से गुड़िक को मानवे ना. आपन कहे मु गोटे स्वप्न रे गोटे जिनस एक्सपीरियंस कली सेटा आपनकर सेंस केबे मानिबो. आपन देखिया गोटे जिनस विषय बहुत चिंता करछंती किंतु केबे तार इंद्रिय माने केबे तार टच पाई नांती. सपोज मु आपन कहले आजकल तो समस्ते खाइलेनी बहुत, किंतु ड्रैगन फ्रूट जदि के न खाइथिबे सेटा केमिति फील हुए कौन हुए नाटा जेते सुनिले फोटोटा जेते देखेले भी तार टेस्टटा आपनकर केबे तार माने गोटे कल्पना भी आसीबो नाही. क्रंची लागिबो ना सॉफ्ट लागिबो ना कोकोनट भलिया लागिबो ना मैंगो भलिया लागिबो ना एप्पल भलिया लागिबो ना लीची भलिया लागिबो. आपण कल्पना कौन कल्पना करिवे जे पर्यंत टेस्ट बर्ड्स माने ताकू होल्ड न करछंती. किंतु आपण स्वप्न रे देखिदेले कि हाँ मु बसी कि ड्रैगन फ्रूट खाउची. एबे आपणक इंद्रिय सेटा को मानिबो नाही. किंतु आपण खाइबा कथाटा जे मिथ्या ता मध्य नुहे. Somewhere you have experienced it, and it is that world which is parent or kin. कहले से जो profound existence रही, that profound existence is like a parent or kin. Kin माने बंधु बांधव, relations, cousins, uncles, aunts, empty. So people who are related to you. Although we live in a world that is dominated by matter and material forces, nevertheless, all kinds of non-material movements come to us from beyond the material universe and give rise to ideas and dreams here. आम भितर आसुथुबा जेकोसी गोटे आइडिया, कौनसी गोटे कथा, कौनसी गोटे मन को स्पर्श करुथुबो. आउ स्वप्न शोइबा को गले जो स्वप्न गुड़िक आम देखुंती से माने जो प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस रु आसुचंती सेही प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस रो केवल आमर सेही चिंता आमर सेही स्वप्न ता सहित संपर्क रही. जे न बुझी पारिबो से कहबेटा इमेजिनेशन. आदो इमेजिनेशन इट इज ए प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस कहले श्री अरविंद. आउ केबे ड्रीम को आपण आज इमेजिनेशन बोली कहबेनी. अ रिफ्लेक्शन और अ मूवमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन नो. इट इज ए प्रोफाउंड एक्जिस्टेंस. Sri Aurobindo has used the word existence. That world also exists which produces the dreams or relates to the dream, parent or kin to the ideas and dreams. देखो केमती गोटे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हम. एवं से जगत टी केमतिया where space is a vast experiment of the soul. सोल एठी केवल थियोरी पढुची, तार सबु एक्सपेरिमेंट से लैबोरेटरी रे करिवो. Where space और सेठिकार जो देश बा सेठिकार जो जगत रही दैट स्पेसटा हूँ कौन ऑब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. टाइम हूँ सब्जेक्टिव, स्पेस हूँ ऑब्जेक्टिव. चेतना निजको जोठी स्वरूप दे पारिबो सेटा स्पेस. चेतना जोठी स्वरूप दे पारिबोनी सेटा काल. ए टाइम एंड स्पेस कथा आगु को बहुत आलोचना हबो. मु से कथा आज बेसी एठी करिबिनी कारण एठी सिंपल अर्थ रे स्पेस माने सेठिकार जो जगतर चारिपटे वातावरण रही
That space is a vast experiment of the soul. In an immaterial substance linked to ours, in a deep oneness of all things that are, the universe of the unknown arose. दीटा जिनस घटिला कौन ना गोटे इममेटेरियल सब्सटेंस. से मेटेरियल सब्सटेंस नुहे माने मैटर जो पंच महाभूतर तत्व रु तयारी हेछि खित तप तेज मरुत व्योम ता भितरु से बाहरी नाही. से रीति पई से इममेटेरियल सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस जो तत्व जो धातु बा जो पदार्थ रु सेठी जात हेछि दैट इज इममेटेरियल बट लिंक्ड टू आवर्स. से सूक्ष्म हेले मध्य स्थूल जगत सहित तार संपर्क रही. इन ए डीप वननेस ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर. आम जगत रे देयर इज नो वननेस, देयर इज नो हार्मनी, बट सेठी जो सब्सटेंस रही, एवरी सब्सटेंस इज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर, इज नॉट डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट or discriminated. It is all a deep oneness there. आउ एपरी गोटे तत्व आउ एपरी गोटे स्वभाव. स्वभाव कौन? oneness. The substance that exists with oneness, in oneness, of oneness, by oneness, for oneness, gives rise to the universe of the unknown. माधव पंडित ये गोटे बढ़िया एग्जांपल देखी कहते दिस क्रिएशन रिवील्स द मैग्निफिसेंस, द ग्रैंडोर्स ऑफ द इन्फिनाइट, एंड इट थ्रोज इनटू द प्ले full of chances, full of risks, a million moods, a myriad energies. Thrown also into the play are world shapes, world forms, and those forms are fancies of its truth. The governing truth fancies and throws out numbers of shapes of worlds. Also thrown into the play are formulas of the freedom of its force. First comes truth and then the force, which is free to operate as it chooses. एक कथाटा सी नेक्स्ट पैसेज पई कहले, किंतु यार गोटे डीप रिलेशन अछि पूर्व कैंटो सहित. कहीं कारण ए जगत रे सब किछि संभव, सब किछि. श्रद्धावान मध्य लिखिले yes, everything is interconnected even here in our material universe, but here we feel the division and the separateness more. They are in that profound existence and that soul space which Ashwapati is experiencing. He sees the universe of the unknown rising up like a great mountain. Arose कहले ना तो इट्स लिखले से जेमती सत्य जेमती कोठ गोटे उठिला भलिया प्रत्यमान हेउछि. A self creation without end or pause. स्वजात प्रदेश गोटे सिए तार ना कोठी आदि अच्छी ना अंत. रिवील्ड द ग्रैंड्योर्स ऑफ द इन्फिनाइट. अनंत तार जो महान श्रृंखला सब रही से गुड़ी को सी सेठी व्यक्त करुछि. रिवील्ड इट फ्लंग इनटू द हजार्ड्स ऑफ इट्स प्ले. ए जो प्रदेश रे जो खेलटी बा जो प्लॉटटी एटी प्ले माने होछि जो वातावरणटी धीरे धीरे अश्वपति आगे खोलुची. फ्लंग डोर ऑलवेज फ्लंग्स खोले. तो जो प्रकार वातावरण से खोलुची से गुड़ाए रिस्क अच्छी, हजार्ड्स अच्छी, डेंजर्स अच्छी. ओफ मिलियन प्रकार मूड्स आसी जाई पारे ताकू देखिकी. आ गोटे विशाल एनर्जीज रो फ्लो अच्छी से स्टॉर्म लाइक. व्हेन ही सेज इट वेरी गोटे इंटरेस्टिंग जिनस लिखुछंती. व्हेन ही सेज दैट hazard word, he is suggesting there is danger, there is chance, there is risk of the unexpected. सेठी कोन हे जीव जणा नाही. कि सेम टाइम रे कहउछन देयर इज दिस तापुरपुर कहले एक्सपेरिमेंट ऑफ द सोल. तेणु एक्सपेरिमेंट माने सेठी किछि सर्टन नाही. गोटे एमितिया हबो बा एमिति ही सेटा दिसुची माने एटा हेइथिबो सेमति आपण कहि परिबेनी. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. कोन बाहरिबो जणा नाही. सो द सोल एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन दैट वर्ल्ड. आज जिते कवि कहते अ मिलियन डिफरेंट मूड्स, इट मीन्स द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस.
चेतना एटी अनेक फॉर्म ने थाए, अनेक प्रकार मूड रे थाए, a million moods. Myriad माने मध्य so many that they cannot be counted, a myriad of stars गणी परिबानी में अगणित से से कहले myriad energies जो इन्यूमरेबल यूनिवर्सल एनर्जीज ऑफ फोर्सेस अच्छंती से जगत रे तांको मूवमेंट्स को सेठी सर्टेनली देखी होउची एवं देखी होउची that the world shapes that are fancies of its truth तार गोटे सत्य रही से सत्यर अनेक फैंसीफुल जिनस रही द वर्ड फैंसीज एक्चुअली मीन आम कहीपर जमती कि गोटे कि गोटे which doesn't look very realistic but it exists. They are the fancies of the infinite truth. It's just a fancy. So आम कहीपर why there is a special reason to call here fancy, but it is a little unreal. से कहले fancies of its truth, but it has taken world shapes and the formulas of the freedom of its force. ये जो इट्स लगुच इट इज फॉर दैट वर्ल्ड, फॉर दैट क्रिएशन रो गोटे सत्यता रही एवं से सत्य एपरी जे सी अनरियलिस्टिक लगे गुड़ाए वर्ल्ड शेप्स क्रिएट करुच्ची आउ तार गोटे शक्ति रही जो शक्तिर गोटे विराट फॉर्मूला ऑफ फ्रीडम रही बा स्वाधीनतार गोटे मंत्र रही एवं यही स्वाधीनता बल रे सी अनेक फैंसीफुल जिनस से जगत रे क्रिएट कर दे पारुची. Fancies are unpredictable. Formulas guide things in predictable directions. So there is predictability of force and fanciful unpredictability of truth. The creative force is absolutely free to fulfill all its fancies, but it may choose to follow certain formulas. तार निजस्व formulas रही जा द्वारा सी सेठी अनेक fanciful जिनस गुड़िक को निर्माण करिछि एवं अश्वपति से गुड़िक को सब विटनेस करुचंती. There is something everlasting in this passion, this movement, and what is it that we will study next. आमे आजिर क्लास टी को एठी रखिबा. मु जानि विशेष समय है नहीं, it's just 45 minutes, but I'll take a pause here. टिके थ्रोट रे इश्यूज होउची. We will take a small pause. I think it's a good cut-off position also, because after this there is a big movement coming. It poured into the ever-stable fox, a bacchic rapture and revel of ideas, a passion and motion of everlastingness. Eta kona ame next class aku tike decode kariba, but as of now, as we see, Ashwapati is found in such a world which has a greater connection to all the subtlety of this world. ei जगतर समस्त सूक्ष्मता सहित अश्वपतिंकर ei जो जगतटी दृश्यमान होउची से जगतर गोटे संपर्क रही. ए संपर्कटी निबिड़ थिले मध्य केवल स्वप्न और चिंतारे आम सांगे संयुक्त होगी रही एवं जहाँ जहाँ से अश्वपति ये देखा जाऊँगी से कौन सी पार्थिव समूह द्वारा दृश्यमान नुहे, संभव नुहे. कौन सी पार्थिवता कौन सी मर्त्यगत प्रभाव द्वारा ताकू जानी हेब नहीं एवं यही जो अनंत जगतटीर सीमाहीन एवं कौन सी प्रकार से व्याघात नहीं. देयर इज नो पॉज. सी निजर समग्र खेलर प्रसराटी अश्वपति आगे खोली दौची जो डेंजर रही, चांस रही, रिस्क रही, अनेक प्रकार कॉन्शियसनेस लेयर्स रही. हाँ, स्वाम बा मिरियड ऑफ एनर्जीज रही एवं सही जगतर सत्य सही जगतर शक्ति दी जन जाक मिसी द ट्रूथ इज नथिंग बट एक्जिस्टेंस. मन रखता ट्रूथ इज एक्जिस्टेंस एंड फोर्स इज कॉन्शियसनेस. सो जिते ट्रूथ कहुची इट इज एक्जिस्टेंस. देयर इज ए एक्जिस्टेंस but it is fanciful so far as world shapes are considered. It is a force, that means it is a consciousness which has a freedom but a formula also. चेतना से ता पाखरे फॉर्मूला अछि. एक्जिस्टेंस से तार गोटे सत्यता रही. तेणु सत्य होउचंती परम. ट्रूथ इज सुप्रीम. आम ट्रूथ सांगे केवल सुप्रीम ही लगी पारिबो. द सुप्रीम ट्रूथ और द ट्रूथ सुप्रीम एंड द फोर्स इज हिज शक्ति. सो दैट ईश्वर एंड शक्ति of that world has a fancifulness but a formula of fulfilling what they want to do. सेठी जो पुरुष प्रकृति आउ नाहांती, पुरुष प्रकृति एठी सेठी ईश्वर शक्तिंकर जो क्रिएशन रही ताकू अश्वपति देखा जाउछंती. आउ सेठी केमती एबे शक्तिर प्रवाह द्वारा कौन कौन घटी जाउची से गुडी को हमें
नेक्स्ट क्लास पढ़ा मो बाणी को ये विराम देवी आपण मैंने जदि कहीं किसी आउ टिके शेयर करेंगे किसी कहे चित्त भाई विल कोऑर्डिनेट इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, समस्त को नमस्कार, धन्यवाद।